Good morning, everyone. Good morning, Srinivas ji. Good morning. Good morning. I hope you all attended yesterday's session and made some profit in the Bank Expiry. We used strategy and we made around some profit in the Bank Expiry. And visible. Yes, yes. Thank you. Thank you for the confirmation. We will be starting the session in a minute. Good morning, Atulji. Hi, Joji. I hope you all attended yesterday's session and made some profit in the Bankex expiry. We used strategy and we made around, some people booked with around 30 points moment and some people did around 15 to 20 points at max. Good morning, Atulji. Good morning. Good morning, Niruji. So Dev sir will be joining us in a moment. सर कल मॉर्निंग में स्टॉक्स में ही टाइम पास कर दिया था एंड मार्केट भाग रहा था, कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं दिया आप लोगों ने. अमित अंकित जी, जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है वो स्टॉक्स के अराउंड ही होता है. हम लोग ऑप्शन ट्रेड अगर अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी देते हैं. जनरली वी डोंट गिव ऑप्शन ट्रेड इन द मॉर्निंग सेशन. अ फोकस इन द मॉर्निंग सेशन इज अराउंड स्टॉक्स ओनली. Sunita ji, Chandan sir will not be joining. Dev sir will be joining us. Chandan sir will make guest appearances in some sessions, but he won't be joining us today. Let me just check in with Dev sir once. Before Dev sir joins in, if you have any more generic queries, I'll be happy to take it up. Good morning. Good morning. Feel free to share any questions you have. I'll be happy to take it up. सर कौन से पैरामीटर्स पे स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए फिर अप टू. अब ये तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी हो गई. गिव यू कैन आस्क समथिंग अबाउट स्टॉक मोतीलाल ओसवाल न्यू सर्विसेज. आई विल बी हैप्पी टू टेक इट अप. Stockholm has reached 1,11,000 members. Feel free to invite your friends and be a part of the Stockholm community. I'm sharing the link in chat. Ashok Leland View, can we have fresh entry in HAL? We'll take all these up. I bought for Bank Nifty put. Please ask sir about the levels. Rashid ji, we will be giving the levels for Bank Nifty, Nifty and Fin Nifty before starting a session. Sir, can you please confirm whether Motilal also allows option trading in commodities on expiry day up to 11:30 p.m.? I doubt it's till 9 p.m. on expiry days. I'll confirm this and update you in the afternoon session. I'm not sure if it is allowed after 9 p.m. or not, but I'll confirm and update you about this in the afternoon session. So Dev sir is here. Let me add to the panel. Good morning, Dev sir. I hope you can hear me clearly. Hi Anuj, good morning. Hope I'm audible and clear too. Yes, you are audible and clearly visible. Guys, can you hear me? If you can hear me, can you write yes in the chat? Okay, thank you for the confirmation. Dev sir, apparently, I guess we can't hear you. Dev sir?
He's joining us again. Rashid ji, we will update you on that. First, we'll start with the market outlook. Dev sir, can you hear me? We can see your screen. You're on mute. Hope we are clear now. Yes, we can hear you clearly. So let's begin with the market outlook first, everyone. Good morning. Talking about the market, yesterday we saw around 2.5% decline in the Nifty index. Today we are seeing 1% on the upside. तो देखने जाए तो कल एक 2.5% का डाउनफॉल हमें दिखा था, आज 1% की रिकवरी, which shows that the Indian market has still, is still in strength. जो हमारा कल का फॉल था, it was totally, on the global thing, a global update. There was an update in the Japan, there was an update in the US. Actually, जो US वाला event था, जो employment data था, वो हम इतना उसका impact हम इतना नहीं assume कर रहे थे. That's the reason we were not prepared for the fall. But जो दो event एक साथ आ गए और फिर उसका जो impact आया globally, it was huge. So talking about the market, जो हमारा आपको पता ही होगा, जापान में इन्फ्लेशन वाज zero and now they have increased their interest rate. Previously it was zero, उसके पहले तो in fact it was in negative, but उसको उन्होंने बढ़ा दिया है. उस वजह से जो भी लोग येन में, आपको पता ही होगा कि कैरी ट्रेड करते हैं येन में, वो लोन उठाते हैं, लो यील्डिंग करेंसी में लोन उठाते हैं, एंड दे इन्वेस्ट इन डॉलर, दे इन्वेस्ट इन अ हायर यील्डिंग करेंसी. सो वो सारे ट्रेड्स पता है उसके वजह से इम्पैक्ट हो गए, एंड विच आर ह्यूज. कैरी ट्रेड्स की स्ट्रैटेजी बहुत लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े there are people who do this in a huger amount. So उसका impact जो है वो हमें globally देखने मिला, and उसी के साथ employment data भी आ गया. So there were 2-3 things together जो हो गए, उसके कारण we saw a decline of 2.5% in Nifty yesterday. Talking about today, we almost saw 1% recovery at the time of the opening, and अभी भी 1% upside पे ही चल रहा है. So this shows कि जो हमारा कल का dip था, it was totally a news based fall, और still हमारा market intact है, हमारा market still strength show कर रहा है. As we are on the 1% upside, we have almost 250 points positive in Nifty, Bank Nifty 350 points, Sensex 835 points. So we are seeing a good recovery in our market. Talking about the levels, give me a moment, I'll just update you with the levels. Nifty support at 24,200, then at 24,000, upside at 24,500. This was about Nifty. Can someone just update me if I'm audible and clear in the chat, please? Yeah, I can see the levels, so it is clear. So, this was about Nifty. Talking about the other indices, give me a moment. Let me check. So, Bank Nifty support at 50,000. Meanwhile, upside at I would say 51,000. Support at 50,000, upside at 51,000. एंड ये एक्चुअली जो मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको बताया, जो जापान का अपडेट है, जो यूएस का अपडेट है, इट वाज द सोल रीजन फॉर यस्टरडेज डिप. जो भी क्वेरीज आ रही थी मुझे ऑन माय प्लेटफॉर्म एज वेल, जहां पे मुझे डीएम्स आए काफी कि सर व्हाट्स द रीजन फॉर द फॉल. दैट्स द रीजन. जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया प्लस जो इंटरेस्ट रेट अपडेट किया, इतने सालों में पहली बार जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया है. So उस वजह से जो भी hedge कर रहे थे अपना positions, they were buying, they were taking loan in yen, they were investing in dollars. So उस वजह से जो carry trades है वो affect कर गए. उसके वजह से globally हमें एक downfall दिखा है. तो that's the
इंडियन मार्केट्स वर नॉट वीक, आप आज की रिकवरी से वो देख ही पा रहे होगे. Talking about the Fin Nifty levels, Fin Nifty support at 22,800, upside at 23,100. So I guess तीनों इंडाइसेस जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं. आज हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. वील ट्राई, अगर फिन निफ्टी में हम कोई ट्रेड निकाल पाए मॉर्निंग में. यूजुअली वी डोंट गिव ऑप्शन ट्रेड्स इन मॉर्निंग. स्टॉक जरूर देंगे इंट्राडे के लिए. एंड बात कर रहे हैं थोड़े बहुत स्टॉक्स जो हम आज वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. पीसीबीएल अभी के लिए, दैट इज पीसीबी. Then we can keep, give me a moment. Godrej Properties and GE Ship, ये तीनों स्टॉक अभी के लिए हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. We'll initiate trade later. अगर इसमें बनता है तो इसमें, कोई और स्टॉक में बनता है तो कोई और स्टॉक में. और अगर फिन निफ्टी में भी अगर हमें कोई मोमेंटम ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो we'll surely do it. Till then we can take few queries, Anuj. Sure, sir. Let me just probably we can start with GIC RE bought at 435. Meanwhile, I'll move to the upper queries. Okay. थोड़ा वीक रह सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे. वन कैन अवॉइड फॉर नाउ. लोअर और अपर लेवल्स में आपको बता देता हूँ. अपर विल बी 440 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विल बी 320. दोनों साइड थोड़ा बड़ा गैप है, आई नो, बट दैट्स व्हाट वी हैव फॉर नाउ. Sir, a view on HAL, and do we have any fresh entry? HL. So HL ने लास्ट आपको पता ही है काफी टाइम से एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं. रिटर्न्स हमें ऑलरेडी दे चुका है इन द प्रीवियस टाइम्स. यू आर क्वाइट पॉजिटिव फ्रॉम द 2000 लेवल्स इटसेल्फ. 2000 के लेवल से हम बाय कॉल जनरेट किए जा रहे थे. उसमें आज के डेट में पहुंच गया 4500, 5500 तक टच करके आया है. सो यस, वी कैन स्टिल बी पॉजिटिव. अपसाइड पे इसका आप 5500 तक का रेजिस्टेंस मान सकते हैं. नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 4000. सो दोनों ही साइड पे एक हम आपको 1000, ऑलमोस्ट 1000 बोल सकते हैं. 700 पॉइंट नीचे की तरफ एक गैप है फॉर सपोर्ट, एंड ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 900 पॉइंट. सर, कौन से पैरामीटर्स पर स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए फॉर व्यू अप टू 6 months? देखिए, अगर आप 6 months बात करते हैं ना, सो आई वुड रेकमेंड कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पकड़िए. क्योंकि देखिए, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो मोमेंटम आपको दे देते हैं. बट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो आपको मोमेंटम. व्हाट आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक? जिसके नंबर्स अच्छे हैं, जिनका बुक वैल्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, जिसका वो सब अच्छा होगा ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा कराएंगे. द टेक्निकल स्टॉक्स आर द स्टॉक्स व्हिच आर गुड ऑन चार्ट. फंडामेंटल स्टॉक्स वो है व्हिच आर गुड ऑन नंबर्स. सो आई वुड रेकमेंड फंडामेंटल्स. देखिए, आपको फंडामेंटल्स कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं. हर प्लेटफॉर्म पे आजकल आपको पता ही है, गूगल इज गिविंग अस ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी आस्क फॉर. सो आप सीधा आप स्टॉक के फंडामेंटल्स में जाइए. इज द स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग? मतलब ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए इजियर होगा. हम तो बहुत अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं. बट फॉर योर फॉर अ बिगिनर, और मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ यू एज अ बिगिनर, आई डोंट नो, आपको ज्यादा नॉलेज हो सकता है, बट अज्यूमिंग यू एज अ बिगिनर, मैं आपको कहूंगा कि आप फंडामेंटल्स देखिए, आप चेक करिए उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं. So next we have is Motherson bought at 180, 500 quantity. Bought at what price? Bought at 180. 180 पे बाय किया है. ठीक है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं. सीम स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट.
ऊपर की साइड पे आप एक मेरे हिसाब से नहीं करके 195 पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप एक 195 पे इसको बुक कर सकते हैं। नीचे की साइड पे आपका सपोर्ट रहेगा 170। सॉरी। Ashok Leyland seems strong till 260. Above 260, we might see 300 levels. And for Tata Motors, said is better to. और फिलहाल टाटा मोटर्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट अशोक लेलैंड थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा हमारा इन दोनों में से। सर व्यू ऑन भारतीय एयरटेल। देखिए, मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा भारतीय एयरटेल में। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो जिसको एक साल के ऊपर इसमें इन्वेस्ट करके रखना है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप 1 महीना 2 महीना देख रहे हो, तो अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। Sir, intraday trade, I guess people are waiting for that. Even I'm waiting for it. Watch list में already मेरे पास यहाँ पे 9 से 10 स्टॉक है, डोंट वरी। इवन आई एम वेटिंग फॉर इट। जाने के पहले जरूर देख के जाएंगे, बिना ट्रेड नहीं जाएंगे। Sir, review on shipping corporation. Shipping corporation. But which one? I guess they are asking a general overview on it because they have just written shipping corporation. ठीक है, लेट्स अज्यूम इट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ये दोनों स्टॉक अलग है। यूजुअली बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब हम भी जब यहाँ पे फ्लोर करते हैं, पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन इंडिया एंड आईएलए। सो लेट्स कंसीडर इंडिया फॉर नाउ। सो लास्ट थोड़े टाइम में अगर आप देखें तो काफी अच्छा रिटर्न है, अपवर्ड मूविंग चार्ट है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, बट आई वुड रेकमेंड एक 250 के लेवल से आप वापस से री एंट्री कर सकते हैं टुवर्ड्स द 300 प्लस मूव, और नीचे की साइड पे इसका हेवी सपोर्ट एट 200। So next we have is Zomato for intraday. Zomato for intraday, that I'll check in my system. Give me a moment. ठीक है, जोमेटो इंट्राडे के लिए अच्छा लग रहा है। आप इसका सपोर्ट 260 का बना के चलिए, 260 का, एक 4.5 पॉइंट नीचे, एंड ऊपर की साइड पे इसका आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं 270 प्लस। 269 पे थोड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, सो आप 270 प्लस पे इसको बुक कर सकते हैं। बट आई एम नॉट इनिशिएटिंग अ ट्रेड, जस्ट एक क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं हम। Thanks for clearing that, sir. Sir, JWL bought at 730. $730 ऑलरेडी है, आप काफी नीचे चल रहे हो, 575 आ चुका है। आई अग्री कि आप इसी वजह से पूछ रहे होगे। सो ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है अभी ऊपर की साइड पे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 585 अगर आपका क्रॉस करता है तो आपको ऊपर 590 फिर 600 लेवल्स दिख सकते हैं, बट जो आपका बाइंग प्राइस है उसको आने में थोड़ा समय लग सकता है। सर MTNL फॉर नाउ प्लीज अवॉइड, MTNL अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा इस पे, लुकिंग एट द चार्ट, सो अभी के लिए अवॉइड कीजिए प्लीज। So view on RVNL. RVNL काफी अच्छा रिटर्न्स इन द ईयर।
देखिए अगर 600 क्रॉस करता है ना, वी कैन सी फ्रेशर लेवल्स अराउंड 700 इसमें, सो वील हैव टू क्रॉस 600 मार्क टू रीच 700 फॉर नाउ, एंड नीचे की साइड पे इसका सपोर्ट विल बी एट the 20 MA itself 432, so 435 का एक आप सपोर्ट मान के चलिए इसमें, एंड ऊपर की साइड पे 600 क्रॉस करना जरूरी है टू इन ऑर्डर टू रीच 700 लेवल्स. Sir, can we buy on dip now? Which sectors is best to enter now? Like these questions are asked by the same person. Yeah. So मैं आपको एग्जैक्ट सेक्टर्स बता देता हूँ जो थोड़े बहुत फोकस में रह सकते हैं इन दिनों में. जी. सो रियलिटी हमारा जो है वो फोकस में रह सकता है यहाँ पे. दूसरा हम बात करें, थोड़ा बहुत फार्मा में हमें मोमेंटम दिख सकता है इन कमिंग डेज. आज ठीक है फिर भी फार्मा, बट इन कमिंग डेज वी माइट सी गुड मोमेंटम इन फार्मा एंड रियलिटी फॉर नाउ. सो आज की अगर मैं बात करूं रियलिटी की भी अगर, सो ईच एंड एवरी रियलिटी स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल. आप देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैंने आपको सुबह वॉचलिस्ट में ऐड करने बोला है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनुज, कैन यू जस्ट कंफर्म? Yeah. Godrej Properties watchlist में ऐड करने बोला, almost 4.7% अपसाइड पे है. ब्रिगेड 7. Guys, we'll try to give you the trade. में हमें मोमेंटम मिल सकता है. आप रियलिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड डिफेंस एज वेल. सो ये तीन सेक्टर फिलहाल हम फोकस कर सकते हैं. एफएमसीजी भी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ से. सर अपोलो टायर्स, seems strong. Give me a moment. Yes. So आपको इसमें अपर साइड 560 का रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल इन कमिंग टाइम्स, एंड नीचे की साइड पे सपोर्ट विल बी एट अराउंड 500. IIFL bought at 396. Just a moment. देखिए मैं खाली कहूंगा पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू आईआईएफएल, एनएमडीसी को हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. एनएमडीसी, एंड लेट्स मूव ऑन टू आईआईएफएल. टिल देन IIFL seems strong one day. ठीक है, अगर आप छोटा सा स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर नाउ, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं. सर एक्सिस बैंक, हाँ, एक्सिस बैंक की तरफ जाने से पहले मुझे जस्ट एक चीज याद आई. मॉर्निंग में वी स्पोक अबाउट यू नो द ग्लोबल मार्केट्स, द इंडियन मार्केट, और जो इम्पैक्ट आया क्यों आया, किस वजह से आया, एंड आज का रिकवरी. वन मोर अपडेट. येस्टरडे द विक्स वाज हाई, यू नो 50% के ऊपर विक्स स्पाइक हुआ था, सो व्हिच वाज हाईएस्ट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट डे. सो जिस दिन हमारा अनुज रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उस दिन हमने ये लेवल का जो विक्स था वो उस दिन देखा था. उसके बाद जाकर येस्टरडे देखा था. सो इवन दिस वाज अ बिगर थिंग कि हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो इतना स्पाइक कर गया था, एंड उस वजह से भी हमें यू नो काफी प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड मिले थे कल. टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक, राइट? करेक्ट. ठीक है, अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं. नियर टू इट सपोर्ट, एक आप 1000 का सपोर्ट मान के चलिए. इसमें ऊपर की साइड पर रेजिस्टेंस एट अराउंड 1250. सो अभी के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट फिर भी ये लेवल्स रहेंगे अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो.
Sir, how to identify intraday trades? Intraday stocks, sorry. जी, इंट्राडे का ऐसा है कि टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करता है, बिलोंग टू टेक्निकल टीम. सो हम चार्ट देखकर करते हैं और थोड़ा बहुत न्यूज भी मैटर करता है, तो न्यूज प्लस चार्ट्स इज आवर थिंग. बट मैं आपको कहूंगा आप वॉल्यूम स्पाइक देखिए, आप न्यूज देखिए, यू स्टे अपडेटेड विद द यू नो लाइव न्यूज, द लाइव थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. आपको पता चल जाएगा. आपको सेक्टर्स इन फोकस देखना है. फॉर एग्जांपल आपको पता रहना चाहिए कि आज कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर के स्टॉक्स आप ढूंढिए. जैसे ही मैंने आपको रियलिटी बोला था, आप रियलिटी में देखिए कौन सा सेक्टर का रियलिटी में कौन सा स्टॉक आपको चार्ट पे सही लग रहा है. सो फर्स्ट यू डिसाइड योर सेक्टर, देन यू डिसाइड योर स्टॉक. Sir, I guess we have already taken Motherson, but can you give a very quick view for long term? Motherson, we are strong somewhere. For long term, you can take a target of around 250 in this. पहले 210 पे एक रेजिस्टेंस है, 210 क्रॉस करता है, सो आपको हायर लेवल्स पे 220 230 मिल सकता है. एंड अगर आप ज्यादा लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो, यू नो बाय ज्यादा लॉन्ग टाइम आई मीन साल के ऊपर, सो आपको 250 तक के भी लेवल्स पे मिल सकते हैं. Sir, what is the view on Punewala? Can we buy? Before we move towards Poonawalla, let's initiate a intraday trade, which will be Syngene, Syngene. Okay. Syngene current market rate is 821.3. Stop loss 813. Target 837. Sir, can you please spell it once again? Syngene. Syngene. Okay. And what was the numbers, sir? Buying target and stop loss? So अभी buying rate थोड़ा ऊपर आ गया है. We initiated it on the system as well. It is 821.3. Stop loss 813. Target 837. अभी 824 आ गया. We have already seen a 3 rupee spike. But ठीक है, आप ये levels पे भी enter कर सकते हो. Because हमारा target 837 है. Got it, sir. It is already on the move. 825, 826. So we are already seeing a momentum in Syngene. The reason is company has introduced a crop protection product for many crops. So एक नया product introduce किया गया है, उस वजह से we are seeing momentum in this. So as intraday trading, we can move towards the query again. I guess, sir, that will be all for the day. Anything you would like to say before we end the session? We have initiated one trade. We have taken a lot of queries. Yes. We'll just finish that Poonawalla because I guess I interrupted you in that. Correct. Yeah. So Poonawalla seems strong. ऊपर की साइड पे बहुत close side resistance है 381 पे. It is not closed, but a different type of close I meant. 380 पे आप इसका रेजिस्टेंस लेके चल सकते हो एंड नीचे की साइड पे एक 330 का आप सपोर्ट लेके चल सकते हो. 1:1 ट्रेड बनेगा. 30 पॉइंट्स आप 30 पॉइंट्स नीचे. And also, sir, we would like to take one question. Actually, that was not Motherson. That was Motherson Sumi Wiring. Which one again? Motherson Wiring. WIRING. Okay, I'll drink. Okay. The current market price is 72.75 for that. I'll have to check in my system. Give me a moment. Yeah. Is it 72, the current market rate? Yes. The question was for long term, right? Correct. Okay.
So for long term, first of all, the immediate resistance is at around 76, and talking about purely long term, if we cross 77, 76 levels, we might see 80, 90 levels in this. So ज़्यादा बड़ा gap नहीं है, ज़्यादा आपको इतना नहीं है, but 80, 90 आपको मिल सकता है if we cross 77. So, sir, that will be all. Thanks a lot, everyone, for joining in. We have already initiated one intraday trade, Sinjin at 824, stop loss 813, and target is 837. It's already on the move. You please ensure that you book profits and don't forget to join our Fin Nifty expiry at 2:30 p.m. Thank you, everyone. Thank you, Dev sir.